topic is technical guide on accounting for expenditure on CSR and guidance note on accounting for depreciation in Companies Act in the context of Schedule 2. That will be headed by Umang and then Weber. Sir, is the PPT visible? Yes, Umang. So today's topic of the class is depreciation as per Companies Act and CSR. So let's begin with depreciation. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciable amount here means cost of an amount or amount substituted for cost reduced by residual value. The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be used or available by an entity, or the number of productions which the asset will be produced or similar units expected to be obtained from the asset. Basically, depreciation means allocating the fixed cost or cost of an asset over its useful life. Schedule 2 of the Companies Act 2013 specifies. Umang, I think तुम्हारी slides move नहीं हो रही है. Okay, sir. Is it moving right? Yes, now it is moving. Schedule 2 of Companies Act 2013. Yes, sir. Continue. Schedule 2 of the Companies Act 2013 specifies useful life, जो कि डेप्रिसिएशन के कंप्यूटेशन के लिए हम काम में ले सकते हैं. इससे पहले क्या था? इससे पहले शेड्यूल 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 हमें डेप्रिसिएशन की रेट्स प्रोवाइड करता था, जो कि हम वेरियस एसेट्स पे लगा सकते थे, बट वो फिक्स रेट प्रोवाइड करता था. बट शेड्यूल 2 ने हमारे को यूजफुल लाइफ के बेस पे डेप्रिसिएशन को अलोकेट करने के लिए बोला है. इससे क्या हुआ? कंपनीज अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉपरली यूजफुल लाइफ के बेस पे जितना वो यूज कर रहे हैं उस हिसाब से अलोकेट कर पा रही हैं. और वो जो यूजफुल लाइफ है वो जो शेड्यूल 2 के अंदर पार्ट सी के अंदर स्पेसिफाइड है, उसको वो हायर और लोअर एंड पे भी ले जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू सपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स. Shift from rate-based requirements to useful life. Useful life is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity. ये बेसिकली कि असेट एक एंटिटी के लिए कितना चलेगा, यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने के लिए एक मैनेजमेंट जजमेंट है. मैनेजमेंट के हिसाब से वो असेट कितना चलेगा, वो एक यूजफुल लाइफ है. यूजफुल लाइफ ऑफ सेम असेट डिफरेंट फ्रॉम यूजफुल लाइफ स्पेसिफाइड इन पार्ट सी. शेड्यूल 2 के पार्ट सी में यूजफुल लाइफ प्रोवाइड की गई है. यूजुअली वो उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. और द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट शैल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यूजफुल लाइफ के लिए एक्ट में वर्ड स्पेसिफाई किया डिफरेंट, और रेजिडुअल वैल्यू के लिए एक्ट में वर्ड स्पेसिफाई मोर देन. मतलब लेस देन हम ले सकते हैं 5% से, बट अगर अपन मोर देन लेते हैं तो हमें उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर प्रोवाइड कराना पड़ेगा. और डिस्क्लोजर विद जस्टिफिकेशन होना चाहिए, विद सपोर्टेड बाय टेक्निकल एडवाइस, कि हम उसको अंदर वो डेविएशन है वो क्यों ले रहे हैं, सपोर्टेड बाय टेक्निकल एडवाइस. बट जहाँ पे ये डिस्क्लोजर यूजफुल लाइफ में हमें डिफरेंट के लेना पड़ेगा, चाहे हम उससे लाइफ से कम लें चाहे ज्यादा लें, तो हमें ये डिस्क्लोजर उसके अंदर देना पड़ेगा. As per Schedule 14, depreciation should be viewed as. So basically meaning thereby कि जहाँ कहीं पे भी आपकी useful life अगर different है, which has been provided in the Schedule 2 of the Companies Act, तो आपको you have to basically seek the technical advice from the some expert that yes, the useful life is say for building the useful life which has been provided in the Schedule 2 is 30 years or 60 years as the case may be, and the company is taking say 25 years as useful life or 35 years useful life, then
technical advice from some expert will be required. So this technical expert should be from an expert, not from anyone. That company's management can just write that this is the useful life. So one should actually obtain the expert's advice, who may be some internal expert of the company as well as some outside expert of the company. So based on that different useful life, the depreciation should be computed. And how depreciation will be computed, I'm sure that Umang will explain in next slide, subsequent slide. Yes, sir. Sure, sir. As per Schedule 14, depreciation was to be viewed as minimum rates. डेप्रिसिएशन जो उस मिनिमम रेट स्पेसिफाई कर रखा है शेड्यूल 14 के अंदर, अगर आप उससे लोअर रेट लेना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो, तो टेक्निकल इवैल्यूएशन लोअर रेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैट्यूट अप्लाई करने पड़ेंगे. But whenever the management estimates that the useful life of an asset of the enterprise is shorter than the estimated in the provisions, the depreciation provision appropriately computed by applying higher rates. आप higher rates लगा के depreciation की rate ले सकते थे, ये as per schedule 14 में define था. But if the management estimates that the useful life of an asset is longer than that advised in the provisions, then depreciation at lower rates can be advised by the statute and can be applied only in accordance with the requirements of the statute. अब जो ways define करे गए थे as per Companies Act 1956 में, उस हिसाब से ये चीज आप हायर और लोअर ले सकते थे subject to compliance the provisions of that. But schedule 2 में क्या परमिट किया गया है कि आप यूजफुल लाइफ के बेस पे अपने डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन को allocate करो. अब डिटर्मिनेशन ऑफ यूजफुल लाइफ शेड्यूल 2 ने काफी बार बताया कि यूजफुल लाइफ के बेस पर आप डिटरमाइन कैसे करें उस यूजफुल लाइफ को. तो यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन normally based on various factors including the experience with similar types of assets, कि वो हमारे नॉर्मल बिजनेस कोर्स के अंदर कितना चली है, कितना चलती थी और हमारा क्या प्रेडिक्शंस है आगे के लिए. However, the useful life of depreciable asset should be estimated after considering the following factors. First is expected physical wear and tear, कि वो हमारे टाइम में कितनी टाइम में वो खराब हो जाती है, उसका जो फर्स्ट डे वो आउटपुट जनरेट करती है वो कितना कम कर देती है. Obsolescence, legal and other matter at the limits on the use of asset, कि as per गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है उसके यूज ऑफ एसेट पे. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट और कंपनी को अपनी यूजफुल लाइफ डिफाइन करनी चाहिए. अब एसेट जो यूजफुल लाइफ है उसके बेस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ सिंगल शिफ्ट के बेसिस पे ये अजम्पशन ली गई है कि एक एसेट सिंगल शिफ्ट के बेसिस पे जो स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 2 के अंदर, जो यूजफुल लाइफ स्पेसिफाई की गई है वैसे अजम्पशन से स्पेसिफाई की गई है कि सिंगल शिफ्ट यूज होगी एसेट. बट अगर अपन डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट यूज करते हैं उसको एसेट को, तो उस हिसाब से फिर आपको मैनेजमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा यूजफुल लाइफ को और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद सम एक्सपर्ट एडवाइस कि हमने ये जो बेस लिया है डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का कि मोर देन यूटिलाइज का, तो उस पर डेप्रिसिएशन की क्या रेट है, उसकी यूजफुल लाइफ रिड्यूस इस पर्पज से हुई है. सपोज फॉर एग्जांपल इफ अ कार इज परचेज, अब कार परचेज की है और एक कार जो परचेज की है वो नॉर्मल डायरेक्टर को लेके आने के लिए यूज में आती है और एक कार बाकी ट्रैवल के लिए यूज में आती है. तो जो ट्रैवल के लिए यूज में आती है उस पर डेप्रिसिएशन हायर रेट से लगेगा क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कम होगी, और जो डायरेक्टर के लिए कार है उस पर यूजफुल लाइफ ज्यादा होगी क्योंकि वो कम यूज में आएगी. Basically, all the assets lying at the date of balance sheet date that are being acquired and existing assets are being classified into two categories. The assets which are considered under the shift category and the assets which are not under the shift category. And under not shift category, there is a asset category called CPP. The continuous process plan. That will be explained later on, but these kind of bifurcation is done. So explain the single shift. Bifurcation is that NESD means non-extra shift depreciation and CPP means continuous process plan. As per schedule 2, NESD, non-NESD. NESD के अंदर आपको एस्टिमेट सिंगल शिफ्ट के बेस पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि अगर
शेड्यूल 2 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है उससे लोअर है तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इक्वल टू है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट हायर आपने उससे लिए तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो नॉन एक्स्ट्रा शिफ्ट एप्रिशिएबल एसेट्स है उसके अंदर सिंगल शिफ्ट के अंदर ये रूल अप्लाई होता है, बट अगर डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट आपने यूज करी है तो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको एस्टिमेट करनी है और उसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोज करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि आपने क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पे ली है और उसकी बेसिस क्या है। द यूजफुल लाइफ ऑफ मेजर डेप्रिशिएबल एसेट और क्लासेस ऑफ उमंग हेलो उमंग, यहाँ पे मैं थोड़ा तुम्हें रोकूंगा। इनफैक्ट दो तरीके की एसेट है, एक क्लासिफिकेशन तो हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट एंड नो एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंस, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, नॉन एनएसईडी। तो नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन मींस कंपनीज लॉ में कई सारी एसेट इस तरीके की शेड्यूल 2 में डिफाइंड है, जहां पे आप अगर शेड्यूल 2 को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है एनईएसडी, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन। उसका मतलब यह है कि इन एसेट के ऊपर हमेशा जो भी आप यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करोगे, या तो जो लाइफ उसके अंदर दी हुई है बुक्स के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर, और या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा जो भी आप यूजफुल लाइफ उसके लिए डिटरमाइन करोगे, ऑलवेज वन नीड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन दैट यूजफुल लाइफ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन। और जो कंपनीज के अंदर पर्टिकुलरली यूजफुल लाइफ जिनकी जो एसेट नॉन एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन वाली नहीं है, उस केस में व्हाटएवर डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर लाइफ हैज बीन डिटरमाइंड, उसको आप ये करोगे कि जो यूजफुल लाइफ है, और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको एक्स्ट्रा यूज किया हुआ है इन ए ईयर, उसको डबल शिफ्ट के लिए या ट्रिपल शिफ्ट के लिए, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट उसके अंदर है। वो आगे उमंग विल एक्सप्लेन दैट व्हाट आर दोस रेट्स। यस। The useful life of major depreciable assets or class of depreciable assets may be reviewed periodically. Where there is any revision of the estimated useful life of asset, the unamortized depreciable amount should be charged over the revised remaining useful life of the asset. This basically means that कि आपने जो estimate की है useful life, उसको मैनेजमेंट को पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई मेजर चेंज है या नहीं। अब ये जो पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे उसके अंदर ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं है ना, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 सजेस्ट करता है कि एन एस्टिमेट मे हैव टू बी रिवाइज्ड इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग दिस or more experience or subsequent developments. The revision of estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period item. Basically means that जो revise करोगे आप useful life को, उसका effect आप वो एक तरीके से extraordinary item या prior period item नहीं है as per accounting standard 5. Therefore, a company requires to assess whether there have been any change in the value of asset during the year or in future. Useful life को determine करने के लिए periodically access करता रहना चाहिए, और अगर कोई है तो उसको जो नई यूजफुल लाइफ है जो बचा हुआ डेप्रिशिएबल अमाउंट है, दैट इज अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको उस यूजफुल लाइफ के बेस पे अलोकेट करना है। Now here is a question. A Limited is a company incorporated under Companies Act 1956, engaged in the business of manufacturing of toys. A Limited purchased a unit of machinery costing rupees 60 lakhs as on 1st April 2014. As per Schedule 2, the general useful life of the asset is 15 years. However, as per A Limited estimation, the useful life of the asset is 20 years, supported by technical advice. Issue क्या है कि कंपनी कौन सी लाइफ ले, 15 years ले या 20 years ले? तो in this case, keeping in view the requirements of Schedule 2, A Limited क्योंकि वो जो 20 years की लाइफ है उसने in accordance with expert advice और technical advice issued by some expert ली है, तो वो Schedule 2 के अंदर अपने asset को 20 years के बेस पे depreciate कर सकता है, ना कि 15 years जो कि Schedule 2 के अंदर provide की गई है। तो A Limited should also provide disclosure in this regard in the notes of accounts to justify the reason, the difference between the indicative useful life and A's estimated useful life. Residual value.
अब अपन ने देखा था कि डेप्रिसिएशन को अपन लगाएंगे कॉस्ट और अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू क्या है? रेसिडुअल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू है जो कंपनी को रियलाइज होगी आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज एक्वायर्ड। किस पर्पस के लिए कंपनी ने जो एसेट लिया था, सपोज कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है और वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, बट उसने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, बट उसके बाद भी वो क्योंकि वो मशीन है उसके अंदर आयरन और उसके अंदर सब स्क्रैप वैल्यू है, तो वो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, उससे कंपनी को कुछ कैश फ्लोज इनकम होएगा, तो इसलिए उसकी रेसिडुअल वैल्यू वो होती है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट जो एस्टिमेट की जाती है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द एसेट, अपन को डेप्रिसिएशन के लिए उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो एज पर शेड्यूल 2 तो वो 5% है। हाउएवर अगर अपन लोअर देन 5% ऑफ द कॉस्ट लेते हैं तो उसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वल टू 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो शेड्यूल 2 के कंप्लायंस में है। पर अगर अपन हायर लेते हैं 5% से ज्यादा कॉस्ट रेसिडुअल वैल्यू मानते हैं अपनी एसेट की, तो उसका अपन जो ये मान रहे हैं उसका रीजन और उसके साथ जो डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अपन ये 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा से ज्यादा क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी रेसिडुअल वैल्यू क्या है। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लान। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लान क्या है? अ प्लान विच इज required and designated to operate 24 hours a day, मतलब जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब यहाँ पे required and designated to operate 24 hours a day का मतलब यह है कि उसका इनहेरेंट टेक्निकल नेचर ऑफ प्लांट ही ऐसा है कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एग्जांपल्स क्या है? ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो प्लांट्स यूज होते हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। पावर स्टेशंस के अंदर जो प्लांट्स यूज होते हैं उनको कंटिन्यूअसली चलना पड़ता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस पावर प्लांट के अंदर आते हैं। अब the word required and designated to operate 24 hours a day are very significant and should be interpreted with reference to the inherent technical nature of the plant. That is, the technical design of CPP is such that there is requirement to run continuously for 24 hours a day. It is, however, possible that due to some various reasons, such a plant may be shut down for some time. The shutdown does not change the inherent technical nature of the plant. क्लीनिंग के पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए अगर वो शट डाउन होता है या ड्यू टू ऐसे रीजन जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके कारण रॉ मटेरियल की सप्लाई के कारण वो प्लांट शट डाउन हो गया, तो इससे उसके नेचर नहीं बदलेगा कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो कंटिन्यूअस पावर प्लांट है। मल्टीपल शिफ्ट डेप्रिसिएशन। The useful life of an asset working on the shift basis have been specified in the schedule 2 based on single shift working. ये अगर एक asset any time during the year डबल शिफ्ट काम लिया जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर्स और एनी अदर रीजन, वो पहले ये कंपनी पहले डिटरमाइन नहीं कर पाया अब डेप्रिसिएशन लगाना था एट द इनिशियल ऑफ द ईयर कि कितना वो काम आएगा, और ड्यू टू सम वर्क प्रेशर वो डबल शिफ्ट काम करता है, तो डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज बाय 50% फॉर दैट पीरियड। मतलब अगर सपोज 20 डेज के लिए एक मशीनरी ने डबल शिफ्ट पे काम किया, तो जो डेप्रिसिएशन है वो 20 डेज का 50% से इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड होगा वो 20 डेज डिवाइड बाय 365 डेज का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसका 50% से अपन डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर देंगे। एंड इन केस ऑफ ट्रिपल शिफ्ट द डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 100% फॉर दैट पीरियड। मतलब अगर तीनों शिफ्ट में उस एसेट ने काम किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल बेस पे लगता है वो प्लस 100% ऑफ द डेज, मतलब 20 डेज पे जितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था उतना एडिशनल डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज कर सकते हैं। It is noted that extra shift depreciation does not apply to CPP and the asset which have been marked as no extra shift depreciation under Schedule 2. मतलब जो अब क्योंकि CPP पे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसका इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि वो 24 आवर्स अ डे काम करेगा, मतलब 3 शिफ्ट अ डे काम करेगा, तो इस पे मल्टीपल शिफ्ट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वो Schedule 2 में जो लाइव प्रोवाइड की है उसमें लगा के दी गई है, इस पे अलाउ नहीं करते। और नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन असेट्स के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर जो असेट्स स्पेसिफाई कर रखी हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये इनका भी बेसिकली ऐसे है कि ये कंटिन्यूअसली आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आपको अपने प्रोडक्शन के अंदर काम कर रही हैं, तो इनके अंदर भी ये मल्टीपल शिफ्ट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन अप्लाइज टू ओनली दोज असेट फॉर व्हिच द यूजफुल लाइफ हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बेसिकली ये हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, तो उस केस में मल्टीपल शिफ्ट डेप्रिसिएशन लगेगा।
और इन केसेस के अंदर, इन असेट्स के अंदर आपको अगले साल से, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना मतलब फ्रीक्वेंट है क्या या फ्रीक्वेंट नहीं है। अगर फ्रीक्वेंट है तो फिर हमारे को अपने डेप्रिसिएशन की रेट उस हिसाब से और यूजफुल लाइफ उस हिसाब से कैलकुलेट करके आगे के डेप्रिसिएशन को लगाना पड़ेगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये एक तरीके का डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है कि सपोज कोई असेट है, उसकी स्पेसिफाइड लाइफ यूजफुल लाइफ में नहीं है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स वो जितनी जनरेट करेगी उसके हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द असेट. Unit of production method is generally considered appropriate when the number of units that can be produced or serviced from the use of asset is the major limiting factor for the use of asset rather than time. मतलब बेसिकली उसकी यूज जो है वो यूजफुल लाइफ से ज्यादा अपने को बेसिस जो है कि वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो आप डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे भी लगा सकते हो। हाउएवर कंपनी को रेगुलरली ये रिव्यू करना पड़ेगा कि वो उसकी यूनिट्स प्रोड्यूस और सर्विस्ड की असेट फ्यूचर में कितनी होगी, वो पीरियोडिकली कंपनी रिव्यू करके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेगी। ट्रांजिशन टू शेड्यूल 2, अब जो आज से पहले जो शेड्यूल 14 के अंदर एज पर इन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो था और इसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर जो डिफरेंस है, उसके अंदर जो असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2014 को जो कैरिंग वैल्यू, उमंग, यस सर, इसमें ना तुम जो ये रेफरेंस दे रहे हो, ऑफ कोर्स जो गाइडेंस नोट में शेड्यूल 14 का रेफरेंस है, बट आज के डेट में उस शेड्यूल 14 का कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ये तो क्या हुआ कि जिस वक्त ये गाइडेंस नोट आया था ना, जब शेड्यूल 3 आया था, तो उस वक्त तो डेफिनेटली we would require we all required the comparison of schedule 14 with the schedule 2, but as of today क्योंकि already companies act has been into implementation for last 7-8 years, तो शेड्यूल 14 में क्या था इस पे कोई बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली वी शुड फोकस ऑन शेड्यूल 2 ओनली। ओके सर, हाँ कंटिन्यू। WDV method and straight line method. Straight line method of depreciation is the asset will be depreciated over the remaining useful life of the asset, और WDV के लिए schedule 2 के अंदर एक specific rate दे रखी है। उस rate की calculation है कि rate of depreciation will be equal to 1 minus as where as is scrap value at the end of the useful life of the asset divided by cost of asset or WDV of the asset, written down value of the asset to the power 1 divided by remaining useful of the life of the asset multiplied by 100. ये जो WDV का फॉर्मूला दे रखा है, ये अपने एक्सेल के अंदर डायरेक्ट भी गिवन होता है रिगार्डिंग विद द वर्डिंग इज इक्वल टू DP। उसके अंदर अपने को यही सब चीजें स्पेसिफाई करनी होती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, remaining useful life of the asset, scrap value, and automatically the Excel will calculate the depreciation for the particular period or the year or the number of days as the case may be. एक इलस्ट्रेशन है कि बी लिमिटेड ने जो कि एक एसेट है 23,63,919 की एंड उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 11 इयर्स की, और बी लिमिटेड एस्टिमेट करता है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट होगी। अब इस पे WDV की रेट से क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ रही है, वो कैलकुलेशन ऐसे है कि जो फॉर्मूला ऊपर दिखाया गया था 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ इनटू 100, तो यहाँ पे 23,63,919 की कॉस्ट थी, मेरी स्क्रैप वैल्यू 2,50,000 की थी और 11 इयर्स की मेरी यूजफुल लाइफ थी। तो इस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला अपने को शेड्यूल 2 के अंदर गिवन है उससे रेट निकल के आ रही है, वो आ रही है 18.47% की। मतलब बेसिकली मेरे को हर साल 18.4% का डेप्रिसिएशन मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी जो लास्ट में रेजिडुअल वैल्यू बचेगी वो 2,50,000 बच जाएगी। परचेज ऑफ यूज्ड एसेट, अब ये देखने वाली बात थी कि जो यूजफुल लाइफ बताई गई है वो, क्योंकि शेड्यूल 2 के अंदर सिर्फ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बोला है, अब वो एसेट न्यूली परचेज है या यूज्ड एसेट है, तो इसके लिए शेड्यूल 2 ने खुद ने स्पेसिफाई किया है कि useful life of an asset is estimated on the basis of expectations of the company that purchases the asset, irrespective of whether asset is new asset or used asset। मतलब कि अगर मैं चाहे न्यू कार खरीदता हूँ और ओल्ड कार खरीदता हूँ, और अगर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि दोनों की लाइफ सेम है और दोनों सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेंगे, तो कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2 के हिसाब से मैं उन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर सकता हूँ।
revaluation of an asset. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. यहाँ पे other amount substituted for cost काहे के लिए use हुआ है? The expression other amount substituted for historical cost means revalued amount. The depreciation should be the carrying value of the asset after revaluation. मतलब depreciation अगर अपन revaluation कराया है चाहे during the year चाहे beginning of the year या तो अपने को जो carrying value लेनी है वो revalued value लेनी है, ना कि कैरिंग अमाउंट एज पर जो WDV आ रही थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अब हो गया तो अपन अब रिवैल्यूड वैल्यू लेंगे. और डिस्पोजल पे ऑन द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट द डिफरेंस ऑफ नेट डिस्पोजल एंड द नेट बुक वैल्यू दैट इज कैरिंग अमाउंट और should be charged or credited to P&L as the case may be. मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे तो मैं उसको क्रेडिट कर सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, और अगर मेरे को लॉस हुआ है तो मैं उसको डेबिट कर सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर. और ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट होगा मेरी कैरिंग वैल्यू और मेरी सेल वैल्यू. अगर मेरी सेल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट होगा और मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा P&L के अंदर, और अगर मेरी सेल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है तो मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा P&L के अंदर डेबिट साइड में और लॉस बुक करूंगा ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. However, अगर लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट पे और वो लॉस पहले पहले रिवैल्यूएशन कराया था और रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था और उसी एसेट पे अब अपने को सेल करने पे लॉस हो रहा है, तो जो अपन लॉस बुक करेंगे P&L के अंदर वो नेट ऑफ करके करेंगे. यानी पहले जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अपन ने जितना गेन बुक किया है अगर लॉस उससे ज्यादा है, सपोज मैंने एक एसेट को रिवैल्यू कराया और उस रिवैल्यूएशन का गेन 1 लाख आया और मेरे को लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट आया 25,000 का, मैंने जब बेचा तो 25,000 का लॉस आया क्योंकि अब मैंने मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1 लाख पड़ा है उस एसेट के अगेंस्ट में, तो मैं रिवैल्यूएशन वाले 1 लाख को 25,000 से कम करके P&L में कुछ नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने पहले उसकी वैल्यू को रेस किया था बट उसकी मार्केट वैल्यू अब उसके साथ ऑप्शन नहीं है. पर अगर मेरे को लॉस हुआ है 1,25,000 का और मेरी रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ 1 लाख पड़ा है तो मैं 1 लाख को सेट ऑफ कर दूंगा और जो रिमेनिंग 25,000 है उसको मैं P&L के अंदर डेबिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाऊंगा एज एन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर रिवैल्यूएशन आपने मतलब ज्यादा कर लिया रिवैल्यूएशन एसेट का एक्चुअल से, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए है कि उससे फिर आपका जो लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट के अंदर पहले उसको आप उसको सेट ऑफ करो और उसके बाद अगर उसके बाद भी लॉस है तो आप P&L में डालो. कंपोनेंट अप्रोच शेड्यूल 2 स्पेसिफाई करता है कंपोनेंट अप्रोच को. कंपोनेंट वाइज अप्रोच इट बेसिकली मींस दैट अगर एक एसेट है और उसके अंदर एसेट वेरियस कंपोनेंट से बनी हुई है, पर अगर कंपोनेंट की मेजर अमाउंट है और कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द एसेट. सपोज एक कार परचेज की है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कार 10 इयर्स तक चलेगी, बट मैनेजमेंट का साथ में साथ ये एक्सपेक्ट वो मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन ये भी है कि उसके जो टायर्स हैं वो सिर्फ 4 इयर्स तक ही चलेंगे. तो एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें ये बताया जाता है कि आप कंपोनेंट को दोनों को अलग कर दो और दोनों पे अलग कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करो. यानी टायर्स को आप अलग रिकॉर्ड करो और बाकी कार को अलग रिकॉर्ड करके दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो. तो where the cost of the asset is significant to the total cost. पर ये करना जरूरी है जब टोटल कॉस्ट में से उस एसेट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है और यूजफुल लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. अब ये जो सिग्निफिकेंट वाली पार्ट है डिटरमिनेशन की सिग्निफिकेंट है या नहीं वो कैसे करेंगे, तो उसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी गई है कि कम से कम आप इनको देखो. तो डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड वैल्यू टू डिटरमाइन which asset requires componentization. मतलब कि कितनी वैल्यू की एसेट, सपोज अगर मेरे एसेट ही 10,000 रुपए की है तो मैं उस पर क्या कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बट मेरी वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. थ्रेशोल्ड वैल्यू इन परसेंटेज टू द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट टू टोटल एसेट ऑफ द एसेट, कि वो परसेंटेज की टोटल एसेट का कितना परसेंटेज है, और प्रपोर्शन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पार्ट एज कंपेयर टू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. वो कितनी उसकी प्रपोर्शन लाइफ कितनी है और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट की कितनी है. मतलब अपने एग्जांपल के केस के अंदर मेरे टायर्स की एसेट यूजफुल लाइफ थी 4 इयर्स और मेरे कार की एसेट यूजफुल लाइफ थी 10 इयर्स. तो बेसिकली इसके प्रपोर्शन में यानी 4:10 के प्रपोर्शन में. और ऐसा करने से अपने डेप्रिसिएशन के एक्सपेंडिचर पे कितना इम्पैक्ट आएगा वो भी इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये कंक्लूड करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 और अदर सिग्निफिकेंट पार्ट्स. अब
यूजफुल लाइफ ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर सबकी अलग है और ए सिग्निफिकेंट वैल्यू की है फ्रॉम द टोटल ऑफ द असेट, तो कंपैरिजन ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड मेजर ऑफ वियर एंड टियर कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू बिटवीन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट, उन सबको एग्रीगेट करो, एग्रीगेट इन द पार्ट विद सेम यूजफुल लाइफ। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की यूजफुल लाइफ सेम है तो इन दोनों को क्लब करके इन दोनों की एक डेप्रिसिएशन की रेट लगाई जा सकती है। सिमिलरली अगर पार्ट 4 और पार्ट 5 की यूजफुल लाइफ सेम है तो इन दोनों को क्लब करके इन पे एक सेम डेप्रिसिएशन की रेट लगा सकती है, तो लगाई जा सकती है। तो इस हिसाब से मेरे टोटल कंपोनेंट बन जाएंगे कंपोनेंट 1 दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 3, कंपोनेंट 2 दैट इज पार्ट 2 एंड कंपोनेंट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5, और जो रिमाइंडर है तो इसके अलावा जो वैल्यू रखते हैं वो, तो मेरे एक असेट के लिए टोटल 4 कंपोनेंट वाइज मैं डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकता हूँ। बट ये सब मैं तभी करूंगा जब वो सिग्निफिकेंट हो और जो उसका जो इम्पैक्ट है मेरे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंडिचर पे वो रिलेवेंट हो। डेप्रिसिएशन ऑन लो वैल्यू आइटम्स, शेड्यूल 2 ये स्पेसिफाई करता है कि डेप्रिसिएशन अगर 5,000 रुपीज से कम है तो उसको 100% राइट ऑफ कर दो, मतलब डायरेक्टली उसको पीएनएल में डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इमटेरियल है इस पर। बट as the life of an asset is a matter of estimation, the materiality of impact of such changes should be considered with reference to the cost of asset. The size of the company will also be a factor to be considered for such policy. अब अगर मेरी कंपनी लार्ज कंपनी है और मेरी कंपनी का टर्नओवर सपोज 100 करोड़ है तो मेरे लिए 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज भी एक इमटेरियल अमाउंट है। तो शेड्यूल 2 ये स्पेसिफाई करता है, ये अलाउ करता है कंपनीज को और मैनेजमेंट को कि आप अपने हिसाब से ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की है इसको बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। इसको बढ़ा सकते हो, कितने तक कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर साइज ऑफ द कंपनी एंड आल्सो द फैक्टर्स ऑफ सच एंड आल्सो विल बी द डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी की अपनी कंपनी के मैच्योरिटी लेवल क्या है। अकॉर्डिंगली द कंपनी मे हैव अ पॉलिसी टू फुली डेप्रिशिएट असेट अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स that can be 10,000, 20,000 or a lakh considering materiality aspect in the year of acquisition। मतलब ये आप करना है जब जिस दिन आप असेट ले रहे हो, मिड ऑफ द ईयर नहीं, बाद में नहीं, जिस दिन आप असेट को एक्वायर कर रहे हो। Prorated appreciation, prorated appreciation simply means कि मैंने मिड ऑफ द ईयर एसेट एक्वायर की है या मैंने मिड ऑफ द ईयर एसेट बेच दिया है या मेरे सैलवेज हो गई, मेरे काम की नहीं रही, तो उस पे किस रेट से डेप्रिसिएशन या कैसे करेंगे तो वो यहाँ बताया गया है। When any asset has been sold or discarded or demolished or destroyed during the financial year, the depreciation on such assets shall be calculated on pro rata basis from the date of such addition to the date on which such asset has been sold। मतलब जितने टाइम के लिए मेरे लिए असेट यूज हुई है मैं उतने टाइम तक डेप्रिसिएशन उस पे लगाऊं। The company may group additions and disposals in appropriate time periods, example 15 days, a month, a quarter, etc., for the purpose of charging prorated appreciation in respect of additions and disposals of its asset, keeping in view the materiality of the amounts involved। मतलब पर डे कैलकुलेशन अगर कंपनी चाहे तो अवॉइड कर सकती है और उनको क्लब करके 15 डेज, मंथ और क्वार्टर एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट और मैटेरियलिटी उसको क्लब करके एक साथ भी कर सकती है। बट डेप्रिसिएशन हमको जिस दिन हमने एसेट यूज में लिया, जिस दिन हमने एसेट एक्वायर किया और टिल द डेट ऑफ सेल और स्क्रैप वैल्यू तक का डेप्रिसिएशन हमें लगाना उस पे पड़ेगा। अब शेड्यूल 2 पार्ट सी स्पेसिफाई करता है यूजफुल लाइफ फॉर डिफरेंट असेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट। तो उसमें यूजफुल लाइफ क्या स्पेसिफाई कर रखी है वो जो शेड्यूल 2 में बता रखा है। बिल्डिंग के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 30 इयर्स, ऑफिस बिल्डिंग है तो 30 इयर्स, बट फैंस, वेल्स, ट्यूबवेल्स है तो उनके लिए 5 इयर्स, और अगर अदर्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो 3 इयर्स। रोड्स के लिए कारपोरेटेड रोड्स, आरसीसी रीइंफोर्स्ड कारपोरेट कंक्रीट सीमेंट को आरसीसी कहते हैं, तो अगर उससे बनी हुई है तो 10 इयर्स, और अगर अदर देन आरसीसी से बनी हुई है तो 5 इयर्स। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अब सीपीपी अदर देन सीपीपी है तो उसके लिए 15 इयर्स स्पेसिफाई कर रखी है, और अगर सीपीपी वाली है तो 25 इयर्स प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ स्पेसिफाई की गई है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अगर जनरल फर्नीचर है तो 10 इयर्स, फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर है तो 8 इयर्स। जनरल फर्नीचर मतलब ऑफिस फर्नीचर आ गया, पर अगर फर्नीचर लेट आउट ऑन फायर है मतलब मैंने कोई मेरी असेट है तो मैंने लीज पे दे रखी है या ऑन हायर दे रखी है
तो उस पे लाइफ 8 ईयर्स की है। बिल्डिंग, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स और बंडर्स पे यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स प्रिस्क्राइब कर रखी है शेड्यूल 2 के अंदर। मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड अदर मोपेड्स। मोपेड्स मतलब स्मॉल साइज बाइक्स विद 50 सीसी, तो उनके लिए लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स की। मोटर व्हीकल, मोटर बसेस, लॉरीज, कार्स, टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस of running them on hire, just like Ola, Uber, etc. तो 6 years की। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज और अदर मोटर कार्स 8 years की। और मोटर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग कंबाइंस एंड हैवी व्हीकल्स के लिए भी 8 years की। कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, सर्वर्स एंड नेटवर्क्स के लिए 6 years की। डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स के लिए 3 years की। एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए 20 years के लिए लाइफ स्पाइस है। और इनके अलावा जो अबव मेंशन्ड है उनके अलावा अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसके लिए 5 years की। हाउएवर दीज लाइफ्स आर ओनली यूजफुल लाइफ्स। अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी, तो वो विद डिस्क्लोजर एंड विद प्रॉपर टेक्निकल एडवाइस, विद प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस ये स्टेट कर सकते हैं और इनसे दूसरी यूजफुल लाइफ ले सकते हैं। नाउ फर्दर Vaibhav will take over with topic on CSR. हाँ, Good afternoon, everyone. I will be telling you about the corporate social responsibility. Earlier, corporate social responsibility was voluntary, but now, with the introduction of Companies Act 2013, it has now become mandatory. Before understanding the meaning of CSR, let us understand it individually word by word. It is corporate social responsibility. Corporate means it is only to be followed by the companies. It is a mandatory regulation on the companies only. किसी भी मतलब और कंपनीज भी सारी इंक्लूडेड होंगी, जैसे सेक्शन 8 कंपनी है वो भी इंक्लूडेड होगी इसमें। बाकी कोई भी हो जैसे LLP, पार्टनरशिप या कोई इंडिविजुअल, उनमें किसी को कोई भी CSR के लिए वो नहीं है एलिजिबल। नाउ डेफिनेशन सेज corporate social responsibility is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders and the public. Earlier, the main motive of the companies was to only earn profit and to give returns to its stakeholders like investors. But with the introduction of CSR, it has to report to the public also. It has to make CSR expenditure, which will give, जिससे वो सोसाइटी को और पब्लिक को अपने रिटर्न दे सकेगी। It also says by practicing corporate social responsibility, companies can be conscious of kind of impact they are having on all aspects of society, including economic, social and environmental. मतलब जैसे अगर कोई कंपनी कुछ बिजनेस कर रही है जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, पर वो पॉल्यूशन स्प्रेड करना नहीं चाहती, तो बाय इनकरिंग CSR एक्सपेंडिचर लाइक क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, it can contribute towards its part toward the CSR for cleaning of the environment and towards the society. Now, India is the first country to make CSR mandatory. Earlier, it was voluntary for companies to follow CSR, but now with the introduction of Companies Act 2013, it has become mandatory for companies. Section 135 of Companies Act provides about the corporate social responsibility and other related things to it, such as to form CSR committee, to have CSR policy, to spend on CSR activities, and to report the spending. CSR committee is to be formed by the companies which are eligible for CSR expenditure. It is मतलब जो भी कंपनीज एलिजिबल हैं जिनको CSR एक्सपेंडिचर करना है, they have to mandatory form a CSR committee. But it also provides a provision that जिस भी कंपनी का CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख से कम है, they are not required to form a CSR committee, but still they are required to incur the CSR expenditure. CSR policy describes various things such as list of activities which the company has to incur, and these are to be according to the Schedule 7 of the Companies Act. Schedule 7 specifies the activities which can be incurred by the company in the name of the CSR. Other is to spend on CSR activities. Schedule 7 only specifies the activities. Other activities which are not covered under Schedule 7, companies cannot incur expenditure on that, and they will not amount to the CSR expenditure. And another is to report spending. Board report or directors, and in financial statement, company has to report about the spending, amount incurred, amount
not incurred till date, any surplus amount incurred, or any other detail regarding to the spending. Applicability of corporate social responsibility and calculation of profit. CSR was earlier only voluntary, but it has now become mandatory for those companies which have a net worth of 500 crore or more, turnover of 1000 crore or more, and net profit of 5 crore or more. It will only be applicable to companies, and it will be the criteria is given for net worth, turnover, or net profit. Company has to follow only one criteria. It is not mandatory to follow all three criteria. It means a company which is in loss, it can also be covered under CSR activity if its turnover is 1000 crore or more, or net worth is 500 crore or more. Now, for calculation of net worth of 500 crore or more, net worth can be calculated by the sum of paid up share capital and all reserves created out of profits. पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों इंक्लूडेड होंगे. Securities premium account and all the reserves also. Security premium account will be from the premium on shares issued. It will not include any accumulated losses, deferred expenditure appearing in the balance sheet asset side. They are to be deducted for the calculation of net worth. And it does not also include the capital reserves created out of sale of asset or from revaluation of asset. These are not to be considered in reserves created out of profits for the calculation of net worth. It also specifies about the turnover. Turnover means gross amount of revenue recognized in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods. This is turnover. It is same item of the P&L which is the name of revenue from operations. The amount occurring in that is to be considered as turnover. And if it is more than 1000 crores, then the company has to follow the CSR provisions. Another criteria for CSR, if net profit of a company is 5 crore or more. Net profit means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with Section 198. Section 198 is related to the calculation of profits. Section 198 specifies calculation of profits for two activities, for calculation of managerial remuneration and for accounting applicability of CSR. It is mainly involved, it says that all the capital profits earned by the company are to be reduced for the calculation of net profits for these specified purposes. But net profit computed according to Section 198 will also not include two things mainly. Profit arising from overseas branch or branches of the company, whether operated as separate company or otherwise. किसी भी ब्रांच से अगर ओवरसीज ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस प्रॉफिट में. जो P&L में प्रॉफिट आएगा, अगर उसमें ओवरसीज ब्रांच से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा. Also, dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of CSR. अगर कोई और कंपनी को अपन दे और कभी अगर कंपनी का डिविडेंड आ रहा है अपने इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, and they are also covered under the provisions of CSR, then the dividend income occurring in the balance sheet, it is not to be considered for the calculation of net profit. Now there is a question. There is a company A Limited. Its net worth is 450 crore, turnover is 990 crores, and net profit is 9.5 crores. Will the company be required to form CSR committee? Anybody would like to answer voluntarily? So, in this case, the net worth is 450 crore. For applicability of CSR, the company's net worth should be more than 500 crore, but it is less than 500 crore. So, as per net worth, it is not covered under CSR provision. Turnover of company is 990 crores, but as per provisions of CSR applicability, it should be more than 1000 crores. So, as per turnover, also it is not covered. But net profit of company is 9.5 crore. But for CSR applicability, it is only 5 crore. So, as per net profit, the company is covered under the provisions of CSR. So, it is for the preceding years. So, the company will be required to form the CSR committee.
Now, amount of profits to be attributed to the CSR activity. It means the amount, जितना amount अपने को attribute करना है CSR activities के लिए. Section 135(5) of the Act requires that board of every eligible company shall ensure that company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during 3 immediately preceding financial years. तो जो प्रॉफिट निकाले थे सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग फॉर नेट प्रॉफिट्स they will be average profits of the preceding 3 immediately years. If the company has not completed the period of 3 financial years, then Yes ma'am, it will be explained. Then immediately preceding financial years, all Yes ma'am. The rest. Yeah, remaining period. So if the 3 immediately preceding financial years of the profit, इसमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, टोटल प्रॉफिट नहीं लेना. 3 years का जैसे प्रॉफिट है 1 crore, 2 crore and 3 crore. So the average net profit comes out to 2 crore. So the company has to spend 2 crore, 2% of 2 crore amount on CSR. But what is the case if the company has not completed 3 years from the date of its incorporation? It is given where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial years. जैसे अगर किसी कंपनी को 2 साल हुए incorporate हुए, but requirement is that it has to complete 3 years. It has to compute average net profits for 3 immediately preceding years. Then in this case, the company has to take the profits for the years for which it has completed its life. जैसे 3 साल का है इसमें, पर अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए हैं, तो it has to take the average net profits of the previous 2 years. It will be calculated, CSR applicability will be calculated for average net profits of the years completed. Below given is an example. Company A is incorporated during financial year 18-19 and as per eligibility criteria, it is covered for financial year 2021. It says that 18-19 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर CSR की एप्लीकेबिलिटी 2021 फाइनेंशियल ईयर में आ गई थी. तो कंपनी की फाइनेंशियल CSR की एप्लीकेबिलिटी 2021 में आ गई है, बट कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years from the date of its incorporation. So company A would be at least required to at least 2% of the average net profits of the profit made during financial year 18-19 and 19-20. It will be considered only for 2 years because the company has not completed 3 years since the date of its incorporation. Now, for undertaking CSR activities can be undertaken by the company itself. It means that company can give amount to the activities specified in Schedule 7 for undertaking the CSR activities. Schedule 7 में activities mentioned है, company उन activities से related amount spend कर सकती है and it will amount to the CSR expenditure. By Section 8 company, a registered public trust, a registered society with Section 12A and ATG registration. It can also incur CSR expenditure through a Section 8 company, a registered society within Section 12A. 12A में society और trust registered होती हैं. Company can incur CSR activities through these trust also and societies also. It can also incur CSR activities by an entity established under an Act of Parliament, by Section 8 companies, registered society established by the government. In case of Section 8 company, it can be established by the company, the Section 8 company, or by others. But in case of others, the company should have a track record of at least 3 years in undertaking similar activities. मतलब कंपनी जिसको अपन ने दिए हैं पैसे, it has been established by others, but it is undertaking CSR activities from the past 3 years. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 3 years का, नहीं तो CSR एक्टिविटीज के लिए उसको पैसे नहीं दे सकते अपन. Before understanding duties of the CSR committee, first we shall understand CSR committee. Who shall constitute the CSR committee? In case of a public company, minimum 3 or more directors must form CSR committee, out of which at least 1 director should be an independent director. Now, in case of public company, 3 directors must be there or more than 3 directors, but 1 should be an independent director. Now, independent director is a director which is not a whole-time director or managing director, and he should be a man of expertise in his field, and he should not be related to the company in any way. Now, in case of unlisted public company or private company generally doesn't have independent director. Then it can form the CSR committee by 2 directors only. They are not required to appoint any independent directors in their CSR committee. Foreign company. The CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which
One person shall be a person resident in India, authorized to accept on behalf of the foreign company the services of notices and other documents. Also, the other person shall be nominated by the foreign company. फॉरेन कंपनी के केस में 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है CSR कमेटी के लिए, मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट. Now one should be a resident of India, which shall be able to receive the notices and other documents on behalf of the foreign company, and the other person shall be nominated by the foreign company itself. Now, foreign company is an activity which is incorporated outside India, or the main operations of the company are outside India. They are not carried within the India. Now, another provision is added in CSR committee, which states that where the amount to be spent for CSR activities does not exceed rupees 50 lakhs, there is no requirement for constitution of CSR committee. Function of such committee can be done by the board of the company. एक और प्रोविजन इसमें है कि अगर CSR एक्टिविटीज के लिए खर्चा अगर कंपनी का 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा तो उसमें कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है CSR कमेटी फॉर्म करने की. तो जो CSR कमेटी के एक्सपेंसेस हैं या जो ड्यूटीज हैं, दीज कैन बी परफॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. Now, duties of the CSR committee. CSR committee shall formulate and recommend a CSR policy to the board. CSR policy shall point out the activities to be undertaken by the company as enumerated in Schedule 7. Schedule 7 में एक्टिविटी स्पेसिफाइड हैं जो CSR के एलिजिबल होंगे. मतलब उन एक्टिविटीज़ में ही अपन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तभी वो CSR को अमाउंट होंगे. उन शेड्यूल 7 में अगर कोई एक्टिविटी मेंशन नहीं है और फिर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो CSR के लिए नहीं होगा. CSR committee shall recommend the amount of expenditure to be incurred on CSR activities. जो कमेटी में फॉर्म्ड हुई है CSR की, it shall recommend the expenditure to be incurred during the year for CSR expenditure. It will be based on the computation of profits of the previous financial 3 years. The provision which we understood that 2% of average net profit of preceding 3 financial years. CSR committee shall monitor the CSR policy of the company from time to time. CSR committee should monitor the policy, the amount which the company is spending, which it is implementing itself, and which is implementing through its implementing agencies by other companies. The committee shall establish the transparent controlling mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the company. एक ट्रांसपेरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे कंपनी की. For maintaining transparency, the company mentions the activities undertaken by it on its website. It is mandatory for companies to mention the activities undertaken by it under CSR for the transparency purposes. Now, CSR policy. The CSR committee has to formulate a CSR policy which will specify various things. List of CSR projects and programs which a company plans to undertake, execution and implementation of the same. उसमें पॉलिसी में मेंशन होगा कि CSR एक्टिविटीज कौन कौन सी कर रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट में अपन कितना अमाउंट दे रहे हैं और प्रोग्राम, और उसका इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल भी मेंटेन होगा कि अपन एक बार में कितना अमाउंट दे रहे हैं या ड्यूरिंग द इयर्स देंगे अपन अमाउंट. Another is monitoring process for such projects and programs. CSR policy will specify who will monitor the amount spent and who will monitor about the amount unspent during the activities and the progress for these activities and programs which the company has incurred for CSR. Surplus from CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of the company. Surplus can arise from CSR activities of the company in case it has received any income from sale of material of the company. Now that surplus cannot form part of the business profit of the company and it shall be plowed back into the CSR project. इसको कंपनी अपने प्रॉफिट में कंसीडर नहीं कर सकती और जो सरप्लस हुआ है उसको CSR के एक्सपेंडिचर में वापस लाना पड़ेगा. Now Schedule 7 has specified activities which can be included in the CSR activities. Various activities have been specified in Schedule 7. Those activities which are not under Schedule 7 or given here, the company expenditure made by the company on those activities will not be covered as CSR expenditure. Expenditure such as eradication of hunger and poverty, promotion of education, gender equality and women empowerment, and expenditure like this. Now CSR, the rule says that the company should do CSR expenditure in its local area. मतलब जो कंपनी जिस एरिया में ऑपरेट कर रही है उसी लोकल एरिया में जितना ज़्यादा हो सके उतना खर्चा करना चाहिए CSR से रिलेटेड, क्योंकि जिस एरिया में कर रही है उस एरिया को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. तो CSR एक्टिविटीज शुड बी डन बाय द कंपनी इन दीज एरियाज ओनली.
but it is not a mandatory requirement for the company. It is a voluntary requirement. मतलब कंपनी को ऐसा करना चाहिए, पर कंपनी पे कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपने लोकल एरिया में ही करनी है एक्सपेंडिचर CSR के लिए. Now, nature of CSR activities. CSR expenditure can be ongoing or other than ongoing project. Ongoing project is a project. It is a multi-year project that is stretching over more than one financial year. Ongoing project is a project which is started in a particular year and it will be continued throughout the years, but maximum can be 3 years. It should be more than one financial year. It is not a one-shot payment. If it is a one-shot payment, then it will be considered under other than ongoing project. It should be not exceeding 3 years, excluding the year of commencement. It means that ongoing project which as company incurred, it should not exceed 3 financial years, but it shall exclude the year of commencement. मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया CSR के लिए ड्यूरिंग द ईयर, then it should be completed within the financial year 19-20, 20-21 and 21-22. It means it can be completed before March 31st, 2022. It includes a project that was initially not approved as multi-year, but the board extended its duration. It will also include a project that was earlier other than ongoing, means it was for a one-shot payment, but board has amended, and it should be with a reasonable justification that the board should change the project from other than ongoing to ongoing. Then the project which was initially not approved as multi-year, but board extended its duration, it will be also covered under ongoing projects. And all the projects which are not ongoing are all other than ongoing projects. Now, CSR expenditure in case of other than ongoing projects. Expenditure for other than ongoing projects will be one-shot payment. Expenditure will be made once a year and it will be covered for CSR. Now, subsection 5 of section 135 of the Act has been amended, whereby any amount remaining unspent under subsection 5 pursuant to an activity for other than ongoing of 6 months from expiry of financial year. इस प्रोविजन में स्पेसिफाइड है कि अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, तो इट हैज टू ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट, जो खर्चा नहीं कर पाई कंपनी, टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर किसी एक्सपेंडिचर को करना था 50,000 का, पर 25,000 का ही खर्चा गया, तो जो 25,000 कंपनी स्पेंड नहीं कर पाई है, उसको एक फंड स्पेसिफाइड शेड्यूल 7 में उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. As per the said amendment, the company would have an obligation to transfer the unspent amount to a specified fund. Accordingly, a provision for liability for the amount representing the extent to which the amount is transferred needs to be recognized in financial statement. Now, this amendment says that the company has to transfer unspent amount to a fund specified within a period of 6 months. So, on closing of the financial year, it will be recognized as a provision. Will be recognized as a liability. Because the company has to transfer the amount, it is a liability for the company. It will transfer the amount within 6 months from the expiry of financial year. CSR expenditure in case of ongoing projects. Ongoing projects, as earlier explained, are for more than one financial year. In case of any amount remaining unspent under section 135 pursuant to any ongoing project, shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company in any scheduled bank to be called the unspent corporate social responsibility account. This provision relates to ongoing projects. It says that कि अगर ongoing projects से related कोई भी amount unspent रहता है, then it should be transferred within a specified bank within a period of 30 days from the end of financial year in any scheduled bank, and it will be called unspent corporate social responsibility account. Such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards CSR policy within a period of 3 financial years from the date of such transfer. It says that कि अगर कोई भी जो unspent corporate social responsibility account में कंपनी ने ट्रांसफर किया है, this amount should be spent by the company in pursuance of obligation towards CSR policy within period of 3 financial years. मतलब अगर कंपनी ने फाइनेंशियल 21-22 में कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया, तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन 30 अप्रैल 2022 तक उस अमाउंट को एक शेड्यूल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जो अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट होगा, और इट शुड बी स्पेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. मतलब 30
30 April 2027 तक it should be spent to an activity which is mentioned in the Schedule 7. मतलब जो भी पीरियड है, जिस भी पीरियड के रिलेटेड है, उससे 3 साल तक ले सकते हैं उसको, पर विद इन पीरियड ऑफ 3 years it should be spent on an activity mentioned in Schedule 7. Now, last provision says that as there is an obligation to transfer the unspent amount to a separate bank account within 30 days of the end of financial year, and eventually any unspent amount out of that to a fund specified in Schedule 7, a provision for liability representing the extent to which the amount is to be transferred should be recognized in the financial statement. कंपनी को जो अमाउंट अनस्पेंड रह गया है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी की तरह है, एंड इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट ऑन in a scheduled bank. So at the end of the financial year it will be recognized as a liability. कंपनी की लायबिलिटी होगी कि उसको वो अमाउंट एक शेड्यूल बैंक के अकाउंट में डालना होगा, इसलिए लायबिलिटी है, एंड इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now this shows the summary of the last 2 slides with regarding the treatment of unspent CSR amount. In case of other than ongoing projects, it should be transferred to a fund specified in Schedule 7 within 6 months from end of financial year. अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है तो एक फंड तो शेड्यूल 7 में जो भी फंड स्पेसिफाइड है इट शुड बी ट्रांसफर टू दैट विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अगर नहीं करा कंपनी ने देन इट विल अट्रैक्ट द पेनल्टी ऑन कंपनी एज पर सेक्शन 135(7). The penalty for non-compliance of CSR is provided, and it will be discussed later. In case of ongoing projects, it should be transferred to unspent CSR account within 30 days from end of financial year and spent within a period of 3 financial years. Now, ongoing projects में अगर कोई amount incur हो गया पर उसको expense spend नहीं किया अभी तक, तो it should be transferred within 30 days from the end of financial year to a schedule bank, and it should be spent within a period of 3 years from the date of transfer of amount. If it fails to spend, transfer to a fund specified in Schedule 7 within 13 days from the completion of 3 financial years. Now, just in the previous example, the company has transferred the amount on 25th April. Now it has to 25th April 2024. 25th April 2024 को कंपनी ने ट्रांसफर किया, उसके 3 फाइनेंशियल ईयर तक वो कंपनी को स्पेंड करने होते हैं, मतलब 24 अप्रैल 2027 तक कंपनी को वो स्पेंड करना था. If company fails to spend that amount within a period of 3 years, then it has to transfer the amount to a fund specified within 13 days. 30 days. That is 25 April 2027 से 30 days. It means 25 May 2027 तक company को वो schedule it should be transferred to a fund specified in Schedule 7. And if it is not also transferred, then the company will attract the penalty as per section 135(7). It specified penalty for in monetary terms and also for imprisonment also. Excess amount spent is allowed to be carried forward. Now a question arises, if the company has to incur, suppose company has to incur 5 crores, but company has incurred 7 crores for CSR expenditure. Now whether company will be allowed to carry forward the amount which is excess spent. Earlier, at the time of its introduction, excess CSR expenditure which was incurred, it was not allowed to be carried forward. But it has been clarified by a third provision to subsection 5 of section 135 of Companies Act 2013 that any excess amount spent that is more than 2% as specified can be carried forward to the subsequent years and adjusted against that year's CSR expenditure. Now, अगर कंपनी ने कुछ एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दिया तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है फॉर 3 years एंड इट कैन बी एडजस्टेड towards the CSR expenditure of the year to which it is carried forward. For example, if a company is required to spend 5 crore for CSR activity during a financial year and it spends an amount of 7.5 crores for CSR activity, it means company की liability थी 5 crore की CSR के regarding किसी एक financial year में, but it has expended an amount of 7.5 crores. So the excess 2.5 crores, excess expenditure of 2.5 crores against amount to be spent in future CSR activities. 2021-22 में 5 करोड़ का खर्चा किया, 5 करोड़ का खर्चा करना था कंपनी को, but company has incurred 7.5 crores. Now till financial year 2024 to 2025, the company can set off excess expenditure of 2.5 crore against CSR expenditure of any particular year.
Now, there are disclosures regarding CSR activities. In case of CSR activities, disclosures are to be made in board report and also as a part of financial statements. In board report, the board will approve the corporate social responsibility policy of the company and disclose the policy on the website, if any, and disclose the contents of the policy in the board report of the directors. It has to disclose the details regarding the CSR expenditure which the company has incurred or the amount which is unspent. If the company fails to spend the amount on activities of corporate social responsibility, the company shall disclose the reason of not spending in the board report of that financial year. अगर बोर्ड रिपोर्ट में कोई कंपनी फेल कर रही है अमाउंट को स्पेंड करने के लिए, then the company shall disclose the reasons for not spending in the board report. तो कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में स्पेसिफाई करने पड़ेंगे रीजंस कि उन्होंने क्यों स्पेंड नहीं करा है. एंड इन केस ऑफ लॉस द कंपनी हैज टू नॉट इनकर द एक्सपेंस. तो अगर लॉस के केस में कंपनी इनकर नहीं कर रही, then also it has to specify the reason that company has incurred loss. That's why it has not incurred an expenditure on CSR activities. Disclosure as a part of financial statements. As per recent amendments which were brought in last year in Schedule 3 of the Companies Act 2013 and additional disclosure requirement, a company has to disclose the following details regarding CSR. Now that in financial statements also, the company has to disclose the details regarding financial statements. It has to disclose the following details: amount required to be spent, amount of expenditure incurred, amount required to be spent में amount आएगा 2% of average net profit of the preceding 3 financial years, which was calculated. Amount of expenditure incurred will include the expenses which the company has actually incurred. Now, if there is a difference between amount required to be spent and amount of expenditure incurred, it will be shortfall at the end of the year. And the company has to specify the reason for shortfall also. Like the company has not found any reasonable activity for incurring CSR expenditure, or the company is in loss. That's why the company is not implementing is an ongoing activity or an other than ongoing activity. Details of related party transaction, example, contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure. Now, in case the company provides an amount to its related party is described in the AS. For example, it has contributed to a trust which is controlled by the entity itself. Then also it has to disclose about the amount which it has spent in relation, which it has given to the trust which is controlled by the company itself. Continuing the disclosure regarding CSR activities, it has to disclose about the unspent amount of CSR in a prescribed format, which will specify opening balance, amount deposited in specified fund within 6 months, amount required to be spent during the year, amount spent during the year, and closing balance. Opening balance में तो amount आ जाएगा unspent amount जो last year का था. Amount deposited in specified within 6 months. जो भी unspent amount हो गया CSR का, it has to specify the amount which is related to the other than ongoing projects. It has to specify the amount which it has deposited in the specified fund. Amount required to be spent during the expenditure which it has incurred for CSR activities during the year, and there will be a closing balance. Now another disclosure will be regarding excess amount spent on CSR. It will show amount required to be spent during the year and amount spent during the year. It will, if the amount spent during the year is more than the amount required to be spent during the year, then there will be excess amount, and excess amount can be set off for the future CSR liabilities. Details of ongoing projects in addition to below. Ongoing projects की भी डिटेल देनी होती है कंपनीज को जो अभी ongoing है कंपनी की during the year at the end of the financial year. It has to specify its opening balance, amount required to be spent, and amount spent and closing balance. They are to be disclosed for with the company or in separate CSR unspent account, which it has to open within 30 days of the unspent amount, within 30 days of the end of the financial year. Now this specifies the accounting entries for CSR expenditure. For incurring expenditure, if the company has incurred expenditure with CSR expenditure in cash, then the following entry will be done: CSR expenditure to cash or bank account. If it has done in CSR in kind, if it has incurred CSR activities in kind,
then it will credit the purchase or cost of goods consumed. Now this will be recorded as per AS2, which states that inventory will be measured at the lower of cost or NRV, whichever is lower. Now CSR, when not fully spent during the year as per proposed amendment to section 135(5), it states it is for other than ongoing projects. Its entry will be done CSR expenditure to cash to CSR to be deposited in fund. जो अमाउंट कंपनी ने स्पेंड नहीं किया फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स व्हिच इट हैज टू डिपॉजिट इन अ स्पेसिफाइड फंड, it should be disclosed as a liability in the financial statements. Now if it has not incurred expenses relating to ongoing projects, then entry will be CSR expenditure to cash to CSR to be spent on ongoing projects. It is also a liability for the company, which company has to open a special account for CSR to be spent on ongoing projects. Now in the last case where excess spent is CSR when spent in excess, entry will be CSR expenditure debit, CSR pre-spent account to cash to purchase or to cost of goods. Now it will be recognized as an asset in the books of the company. The amount which is excess spent, it can be set off from the future CSR liabilities of the company. अकाउंटिंग की तो हो गई जो क्लाइंट करेगा, बट विथ रिगार्ड्स टू ऑडिटिंग में एक ऑडिटर चेक क्या क्या करेगा अगर किसी कंपनी पे CSR की लायबिलिटी आ गई है. Now he will check whether the company spends at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years. जो कंपनी के 3 preceding financial years के एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहे हैं, उसका ऑडिटर को चेक करना है कि उसका 2% या उससे ज्यादा कंपनी स्पेंड कर रही है, और अगर उससे कम स्पेंड कर रही है, then the company will be liable to the penalty. Other is whether the activities on which the amount for CSR is incurred are mentioned in the Schedule 7 of the Companies Act 2013. जिन भी company has to specify the activities for which it has incurred the expenditure for CSR. Auditor has to check whether these activities are specified in the Schedule 7. अगर ये activity Schedule 7 में mentioned नहीं होगी, then these will not amount to the CSR expenditure. Whether fund utilization certificate signed by chartered accountant is obtained from the implementing agency. Now, if the company provides amount to an implementing agencies for incurring CSR, then it has to obtain a fund utilization certificate from these implementing agencies. Fund utilization certificate is a certificate which is provided by the implementing agency stating that the amount which it has received is used by the company for CSR activities, and it should be signed by the CA. In case of Kendriya Vidyalaya or societies, this fund utilization certificate is required, but it should not be signed by a CA. It is not mandatory to be signed by a CA. Whether CSR1 certificate is obtained from the implementing agency. Now, CSR1 certificate is a form which is issued by the government to the companies which are eligible for taking the expenditure for CSR activities. मतलब किसी implementing agencies को अगर कोई कंपनी अमाउंट दे रही है, तो वो कंपनी रिटर्न में CSR1 का फॉर्म देगी उस कंपनी को कि हाँ हम एलिजिबल हैं CSR के एक्सपेंडिचर लेने के लिए. And this CSR1 certificate will be issued by the government to any company or agencies like trust. Penalty for non-compliance of CSR provision. Non-compliance can be कि अगर कंपनी अनस्पेंट अमाउंट को ट्रांसफर कर नहीं कर रही, या अमाउंट जो 2% ऑफ जो स्पेसिफाइड है 2% अमाउंट उसको स्पेंड नहीं किया, उससे कम स्पेंड किया, then these attract the provisions for non-compliance and it will incur a penalty. Penalty will be for company and for officers responsible such as directors or board members. Penalty on company will be minimum fine will be of 50,000 and maximum fine will be of rupees 25 lakhs. And for officer responsible, minimum fine will be rupees 50,000 and maximum fine will be rupees 5 lakhs, or there can be an imprisonment for a term which may extend to 3 years. These will be attracted only when there is a non-compliance of CSR provisions. Now there are some miscellaneous issues which are clarified by issuing FAQ by the CSR committee by the government. Whether provisions of CSR apply to a Section 8 company. CSR has clearly specified that the activities incurred in normal course of business will not be covered under CSR. Now for sports and for other purposes only. Now the CSR provisions apply to a company registered for a charitable purpose under Section 8.
CSR के प्रोविजंस में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि ऑल द कंपनीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही है, दे हैव टू फॉलो CSR प्रोविजन. Now section 8 companies also is a company, so it will be required to implement the CSR guidelines, and it has to do additional activities which are specified in schedule 7 towards the CSR. The activities which it is incurring in the normal course of business will not be covered under CSR. Where a company receives a grant from others for carrying out CSR activities, the CSR expenditure should be measured net of grant. Now, if the company has received a grant for doing the CSR activities, then in profit and loss, the CSR expenditure which it has to show will be shown net of grant. Well, CSR expenditure, like CSR expenditure for a company is 8 crore, but the company has received a grant for 2 crores. Then in profit and loss, statement of profit and loss, the company will show a CSR expenditure of 6 crores only. Another issue is whether payment of salary wages to employees and workers during the lockdown period can be adjusted against the CSR expenditure of the company. CSR policy clearly specifies that the payment for employees or the benefit of the employees or the family of the employees will not be covered under the CSR. Now, in case of lockdown also, the payment or wages made to the employees during the lockdown period were not covered under the CSR provisions. So, the payment of salary wages to employees and workers during the lockdown period shall not qualify as admissible CSR expenditure because this is a moral and a statutory obligation of the employer. So, it will not be covered under CSR. Another issue is whether contribution made to PM CARES Fund shall qualify as CSR expenditure. Contribution made to PM CARES Fund shall qualify as CSR expenditure as clarified by Office Memorandum CSR 05/1 2020 CSR MCA dated 28 March 2020. Notification आया था 28 March 2020 को, which specified that CSR that the expenditure made towards PM CARES Fund will qualify as a CSR expenditure. But ये तो PM CARES फंड में जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपन वो तो CSR के लिए होगा एक्सपेंडिचर. बट कोई अगर स्टेट रिलेटेड है, स्टेट रिलेटेड CM फंड है, उसके यहाँ स्टेट रिलेटेड रॉड फंड है, तो उसके लिए रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंस होगा, it will not amount to the expenditure towards CSR activities. It will only be available for PM CARES fund. Another issue is, will being a holding or subsidiary company of a company which fulfills the criteria under Section 135(1) make the company liable to comply with Section 135 even if the company itself fulfills the criteria. ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी पे CSR का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो क्या उसकी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी पे भी CSR का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 135 स्पेसिफाइज दैट अगर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल है प्रोविजन तो उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी पे वो प्रोविजन नहीं होगा जब तक वो खुद कंपनी CSR के प्रोविजंस के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, कंपनी A is covered under the criteria mentioned in section 135(1). Company B is holding company of company A. Now, in this case, company A एक कंपनी है which is covered under section 135. That is the provisions of the CSR activities. मतलब कंपनी ए को CSR का एक्सपेंडिचर करना है और कंपनी भी होल्डिंग कंपनी है कंपनी ए की. तो द इशू इज वेदर कंपनी बी इज आल्सो एलिजिबल, is also required to do the CSR activity. It is clearly specified that company B will not be required to do the CSR activities unless it fulfills the criteria itself. मतलब कंपनी B जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगी CSR का तब तक कंपनी B एलिजिबल लायबल नहीं होगी CSR के एक्सपेंडिचर के लिए. Thank you everyone. If you have any doubts, you can ask. हाँ, किसी को पूछना है कुछ या मैं पूछ लूं? हाँ विकास, आई थिंक अपने इनपुट दे दो तुम, विकास और प्राची. तेरा नाम क्या है? अभिषेक. क्या समझ में आया? तो ऐसे समराइज कर दे. CSR एक्सपेंडिचर को 2 लाइन में बता दे. तेरे क्या समझ? हाँ हाँ, एक लिमिट होती है CSR की.
तो लिमिट से ऊपर जाएगा कोई भी उसको सीएसआर बनाना पड़ेगा, 3 इयर्स भी बनाना पड़ेगा ऐसे उसकी लिमिट 4 आउट होने के लिए Out होने के लिए 3 3 इयर्स का years क्राइटेरिया खत्म करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे बोलना हाँ, फिर सीएसआर बनाना पड़ता है, सब्सिडी कंपनी का एप्लीकेबल होता है। सब्सिडरी पे एप्लीकेबल होता है। सब्सिडरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सब्सिडरी जब तक खुद फुलफिल नहीं करेगी क्राइटेरिया। उल्टा बोल रहा है, तो आगे बोल।